Okay guys, I'm sorry वो internet issue था, so that's why मुझे दोबारा से resume करना पड़ रहा है. Okay, so I was talking about covalent bonds in hydrogen. Now this hydrogen has one electron, okay, and this hydrogen has one electron. Now, can share those electrons in a covalent bond? Yes, if they come close, and here this is the area. Okay, so if I can draw, okay, this is one hydrogen, okay, with one electron, okay, and this is another hydrogen overlap with the shell of hydrogen, and this is its electron. For a moment, this hydrogen has duplet, and for the moment, this hydrogen has complete duplet. So this sharing of electron pair gives each hydrogen an electronic configuration analogous to helium, because helium is the first member of noble gas. So this is the covalent bonding. Let's have the example of fluorine. Fluorine has 7 electrons, okay? Fluorine has 7 electrons. Another fluorine has 7 electrons. They come close, okay? For a moment, this fluorine has 8 electrons, okay? And for the moment, this fluorine has 8 electrons. Sharing the electron pair gives each fluorine an electron configuration analogous to neon. Neon is another noble gas. Next slide, the octet rule. In forming compounds, whenever the compounds are formed, sometimes atoms are gained, lose, or share to give stable electron configuration, which is characterized by 8 valence electrons. So this sharing is only done in covalent bonds. Atoms gain or lose is a type of bond which is known as ionic bond. When an electron is gained or the electron is loose, the resulting bond is ionic bond, and that will be another topic. The octet rule is the most useful in cases where carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine is involved. Now let's have a bond between carbon and fluorine. कार्बन टेट्राफ्लोराइड. अब हमने ये कंपाउंड एक बनाना है, सो हमें इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वी नीड टू फाइंड इट कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. अब हमें कितनी फ्लोरीन्स चाहिए? टोटल 4. ओके, सो 4 फ्लोरीन्स. और फ्लोरीन्स की जो आउटर मोस्ट शेल जो मैंने आपको कहा है कि विच इज नोन एज द वैलेंस शेल, दिस वैलेंस शेल इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. इनसाइड के तो पूरे हैं ना, पहले में 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं. जो लास्ट शेल होता है उसमें ही इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? सो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब हम देखते हैं तो फ्लोरीन के 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो वी नीड 4 फ्लोरीन्स. तो ये 4 फ्लोरीन्स आ गई हमारे पास. 1 2 3 4. अच्छा, एक फ्लोरीन जो है उसके पास कितनी डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की? 1 इलेक्ट्रॉन की. अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन में ऐड कर देंगे तो इसका ऑक्टेट जो है इट विल बी कंप्लीट. दिस विल हैव कंप्लीट ऑक्टेट. अब हमें जो कार्बन है उसके जो ऑक्टेट है, जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हम एक फ्लोरीन इधर लगा दें, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर और एक इधर, हर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो वो इससे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, सो ये फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, ये आई अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके. दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन, this is another electron and this is another electron. अगर हम इनसाइड पिक्चर देखें तो हमें ये नजर आएगा
कि जो कार्बन है उसके पास बाय द एडिशन ऑफ 4 एटम्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, विद 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच फ्लोरीन, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 and 2 4, 4 and 2 6, and this is 2 8. अब अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फ्लोरीन को देखें तो इन डूइंग सो फ्लोरीन का भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। Is that okay? So count the electrons. 1 is contributed by carbon and 7 of the fluorines. So this is again a covalent bond. The octet rule is satisfied for carbon and fluorine. Achha, it is a common practice that to represent a covalent bond by a line. तो हम इनको lines के साथ show करते हैं. One line represents how many number of electrons? 2. So one line means 2 electrons, right? 2 lines means double bonds भी बनते हैं, 4 electrons. 2 lines means 4 electrons. And triple bonds possibility is also there. So triple 3 lines means 6 electrons shared हो रहे हैं. So single bond में 2 electrons are shared, double bond में 4 electrons are shared, and triple bonds में 6 electrons are shared. Now we can see the example. ये 2 carbons हैं, ठीक है, और 2 carbons के साथ 2 hydrogens, 4 electrons are here, ठीक है, 4 5 6 7 8. ये एक आपका कंप्लीट हो गया. इसको हम लिखते हैं CH2, ठीक है. And the second one is also complete. I mean, we can see this is the second possibility, right? And again this is CH2. तो ये CH2 2 ग्रुप्स हैं जो कनेक्टेड हैं वाया इसके साथ, इन 2 बॉन्ड्स के साथ, ठीक है. ये कितने पेयर इलेक्ट्रॉन्स? यू कैन सी 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. C, ये 2 bonds आ गए, 2 lines. With 1 carbon there are 2 hydrogens. In this carbon there are also 2 hydrogens. In this way there. Now if we go to the another chance, so we can see that this is the one form, right? And this is the second form. Now you can see that 6 electrons are there, and these 6 electrons will be represented by 3 lines. 6 electrons जो हैं, they are shared, okay, and this is the structure of acetylene, right? Then we come to polar covalent bonds and electronegativity. Last topic है इस covalent bond का. What is electronegativity? अच्छा, अब ये आपने देखना है कि जब sharing of electrons होती है, when there is a sharing of electrons, then there is a pull of electrons also by the atoms. So one electronegative element always attracts electrons, and electropositive element releases electrons. ये याद रखिएगा कि this is the general rule for the electronegativity concept. Electronegative, for example, chlorine is electronegative. For example, fluorine is electronegative. Oxygen is electronegative. Nitrogen is electronegative. Carbon is electronegative. But the power of electronegativity is different. Electropositive में क्या आ जाएगा आपके पास? सोडियम electropositive है. इनका काम है electrons को release करना. Calcium, potassium, strontium, and so on, right?
Now let's see the first of all see the periodic table and the trend of electronegativity values. हमारे इस periodic table में the most and highest electronegative atom is the fluorine. The value on the Pauling scale is 4. इसका मतलब है कि elements, when we count elements from here to here, electronegativity increase हो रही है. आप देख लें यहाँ 1.0 है, 1.5 है, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. और अगर हम यहाँ से periodic table से we move over here like this, we go like this. You can see astatine has 2.2, iodine has 2.5, bromine has 2.8, and chlorine has 3 point, and fluorine has 4. So इसका मतलब है कि जो trend है ये increasing trend है along the periodic table of electronegativity, increasing trend. Electronegativity increases from left to right, okay, in the periodic table, and electronegativity decreases going down a group. अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वाइस वर्सा भी ले लें. अगर हम इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे विद इन द periodic table, electronegativity values will decrease. अगर हम लेफ्ट से राइट पे मूव करेंगे, electronegativity values increase. If we move from top to bottom, electronegativity decrease. So this is the trend of electronegativity within the periodic table. Generalization क्या है कि the greater the difference in electronegativity between two bonded atoms, the more polar the bond. अब अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएंगे तो नॉन पोलर है, बिकॉज बोथ ऑफ द हाइड्रोजन हैज द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन एंड फ्लोरीन का में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रेंथ जो है दोनों एटम्स की सेम है, बिकॉज फ्लोरीन के दो एटम्स हैं, दोनों की सेम स्ट्रेंथ है टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड सेम इज विद द नाइट्रोजन. सो बात वहां पर आती है जब अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाएंगे. सो लेट्स सी, हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है. तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बिटवीन दीज टू, one electron is contributed by hydrogen and one electron is contributed by fluorine, right? So maximum probability of finding this pair, कितना टाइम ये पेयर, अगर तो सेम एटम्स हैं तो दे विल स्पेंड हाफ एंड हाफ टाइम, और अगर जो हैं ये डिफरेंट एटम्स हैं विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये पेयर विल रिमेन इन द विसिनिटी ऑफ द मोस्ट electronegative atom. Here in the case of hydrogen and fluorine is the most electronegative. तो ये इसकी vicinity में ज़्यादा टाइम जो है ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगी. So this pair will spend maximum time in the vicinity of fluorine. अच्छा, अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की विसिनिटी में है तो somehow हाइड्रोजन will show the deficiency sign of electrons, not the permanent but the temporary. So इस तरह के जो जो पोलर बॉन्डिंग होती हैं उसमें डेफिशिएंसी साइन जो है that is represented by partial positive, और जो excessive of electrons का साइन है वो partial negative. This fluorine cannot fully grab or hog these electrons towards itself, but the electrons will remain in the vicinity of fluorine for the maximum time. Hydrogen will not allow its electron to completely go from its vicinity. Sometimes, for the lesser time, this pair
can also be found over in the vicinity of the hydrogen. So these are the kinds of polar bonds. So non-polar bonds जो हैं connect atoms of the same electronegativity, and polar bonds connect atoms of different electronegativity. So यहाँ पे आप वैल्यूज देख सकते हैं. हाइड्रोजन और एफ में जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हाइड्रोजन फ्लोरीन की विसिनिटी में होगा. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, वाटर बन रहा है, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल रिमेन इन द विसिनिटी ऑफ ऑक्सीजन. In doing so, both the hydrogens will acquire partial positive charge, and here the two oxygens, they are connected via double bond to carbon. Carbon is oxygen is more electronegative than the carbon. So ये कार्बन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव. Carbon is showing the deficiency of electrons. It means that the probability of finding the electron pair is more towards the oxygen. So this is all about covalent bond, and I hope you will understand. Guys, mid exams में आपका ये topic और the next topic दोनों included हैं. So I will share the syllabus with you also, okay, for the mid exam, and most probably I will take this exam, if I'm not wrong. What is the date on, I mean day 31st August को क्या है? So मैं आपको सिर्फ एक फ्लोट कर रही हूँ आइडिया. 31st को मंडे है, okay, and I think we should get prepared for the mid exam on 31st, but still we need confirmation, and I will send you the confirmation message also. Thank you so much.